Assalamu alaikum. Today we are going to start again chapter number 2, lecture number 3. In the previous lecture, we have discussed the same chapter about the scientific management theory as well as general administrative theory. The previous lecture, the general administrative theory of Henry Fayol, we have discussed the 14 principles which were presented by Henry Fayol. Now, to continue general administrative theory of Max Weber, let us start today. Max Weber developed a theory of authority based on an ideal type of organization, bureaucracy. The word bureaucracy was first used by Max Weber. According to Max Weber, the ideal type of organization must like emphasized rationality. Rationality means the decisions made on logics, rational and irrational. When there is no any logic, that is called irrational decision. When we use logics during taking the decision, these decisions are called rational decisions. تو میکس ویبر نے یہ کہا کہ اگر آپ ریشنل ڈیسیجن لیں گے دین آئیڈیل ٹائپ آف آرگنائزیشن ہوگی. اس کے بعد پریڈکٹیبلٹی مینس دیر مسٹ بی سم پریڈکشن, دیر مسٹ بی سم آؤٹ کم آف آور ان پٹ. فار ایگزامپل, if a person not regular or not punctual within the organization, then it must be predicted as he will be fired. Number 3, impersonality. In the ideal organization, impersonality means that there is any difference between the persons regarding promotion as well as salary set. Moreover, the ideal organization must have technical competency. The human resources, the persons which you are hiring, particularly in technical organizations, must have technical expertise also. And the last one is the authoritarianism, means every manager or every position must have some authority. This is all about Max Weber said. The next approach is quantitative approach to management. Quantitative approach means the numbers, the facts and figures with respect to qualitative approach. When we talk about the qualitative approach, that means we are saying, for example, this is the cell phone. So we can say this is very fast. This has a very large memory. This is qualitative approach. When we talk about it has 1.6 megapixel, 100 GB memory, that means we are talking about the facts and figures. We are talking about in the numbers. The quantitative approach means it's also called operation research or management science. Evolved from mathematical and statistical methods. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوانٹیٹیو اپروچ کہتے ہی ہیں جب ہم ان دی فارم آف نمبرز بات کرتے ہیں. تو اٹ از آلسو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ آلسو ڈیولپ ٹو سالو ورلڈ وار سیکنڈ ملٹری لاجسٹکس اینڈ کوالٹی کنٹرول پرابلمس. ورلڈ وار سیکنڈ میں ملٹری سپلائی چین میں ان کے لاجسٹکس کو مینیج کرنے کے لیے, ان کی کوالٹی کو مینیج کرنے کے لیے کوانٹیٹیو اپروچ جو تھی وہ یوز کی گئی. فوکس آن امپروونگ مینیجریل ڈیسیجن میکنگ بائی اپلائنگ. تو اس کو فوکس کیا گیا, مینیجرز جب بھی ڈیسیجن لیں تو کوانٹیٹیو اپروچ کو یوز کریں, اسٹیٹسٹکس فگرز کو یوز کرتے ہوئے, اسٹیٹسٹیکل ٹولز کو یوز کرتے ہوئے, اسٹیٹسٹیکل فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے,
ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स को यूज़ करते हुए, ऑप्टिमाइजेशन मीन्स व्हेन देयर इज बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। तो ऑप्टिमाइजेशन, इसके बाद इंफॉर्मेशन मॉडल्स को यूज़ करते हुए, इंफॉर्मेशन मीन्स द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एंड देन टू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस। These are all the quantitative approaches in which we can use these by taking different decisions. Computer simulations mean when there is graphical data in the form in the computer, like models, artificial environment, just like you can see in the different video games, and for different trainings कंप्यूटर सिमुलेशन इज़ यूज्ड, जहाँ पे हम एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाए बगैर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसी डाटे को, उसकी आउटपुट को देख सकें, दैट इज़ कंप्यूटर सिमुलेशन। इसके बाद थर्ड अप्रोच आती है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ओबी, इज द एब्रिविएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। द वर्ड ओबी, द स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ द पीपल, as these are the important assets for any organizations. People are important assets for all the organizations. तो अर्ली ओबी एडवोकेट्स जो थे वो थे रॉबर्ट ओवन, हुगो मस्टबर्ग, मैरी पार्कर फोलेट एंड चेस्टर बर्नर्ड। इसको थोड़ा सा देखते हैं। इन चारों जो अर्ली एडवोकेट्स ऑफ ओबी थे, इन्होंने किस तरीके से डिस्कस किया, ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ओवन जो था, लेट 1700 की हम बात कर रहे हैं, तो रॉबर्ट ओवन जो था उसने फर्स्ट टाइम कंसर्न्ड अबाउट डेप्लोरेबल वर्किंग कंडीशंस, प्रपोज्ड आइडियलिस्टिक वर्क प्लेस और आर्ग्यूड दैट मनी स्पेंट इम्प्रूविंग लेबर वाज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इसने ये कहा कि एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो आप पैसे खर्च करेंगे वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी, इससे आपको बेशुमार आउटपुट आएगी। जैसे उनकी वर्क प्लेस को अच्छा बनाया जाए, उनकी पार्किंग, गाड़ी को पार्क करने के लिए, उनकी बाइक्स पार्क करने के लिए जगह बना दी है आपने, उनको बैठने के लिए अच्छी इन्वायरमेंट दे दी है, उनको लिए कैफेटेरिया बनवा दिया है। दैट मीन अच्छी आइडियलिस्टिक वर्क प्लेस के ऊपर आप जो जो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है जी हुगो मस्टबर्ग, 19 की बात कर रहे हैं, 1900 में। इट इज़ कॉल्ड द पायनियर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसने भी साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क को डिस्कस किया है। दैट इज़, जिस तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने देखा कि स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाए, टाइम को कैलकुलेट किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ किया जा सके, तो इसमें भी साइंटिफिक स्टडी को डिस्कस करते हुए इसने कहा कि यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन, एम्प्लॉई को जब सेलेक्ट करते हैं आप तो साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाए, लर्निंग थ्योरीज कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाए ट्रेनिंग के अंदर, एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो जब एम्प्लॉइज़ को आपने मोटिवेट करना है तो उनका जो HR जो बिहेवियर है ह्यूमन का, उसको भी कीप इन माइंड रखा जाए। एम्प्लॉय सिलेक्शन के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जिस तरह आपको आज हमारे मिलिट्री जो टेस्ट हैं उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, डिफरेंट डायग्राम्स, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और हर बंदा उसको अपने सेंस में उसके मीनिंग जो है वो बयान करता है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट से ये पता चल जाता है। सेकेंडली ट्रेनिंग के अंदर भी इसने कहा कि जनाब लर्निंग थ्योरीज़ को अप्लाई किया जाए, किस तरीके से लोगों को लर्न करवाना है, और इसके साथ साथ जब एम्प्लॉइज़ को आपने रिटेन रखना है कंपनी के अंदर तो उनको मोटिवेशन करना भी बड़ा ज़रूरी है, तो मोटिवेशन थ्योरीज़ को भी अप्लाई किया जाए। एंड इसके बाद बारी आती है जी मैरी पार्कर फोलेट की। इसने भी वन ऑफ द फर्स्ट to recognize that organizations could be viewed from perspective of individual and group behavior। इसने इसकी बात की। मैरी पार्कर फोलेट ने ये कहा कि लोगों को एज ए ग्रुप की शक्ल में उनका बिहेवियर को डिस्कस किया जाए, उनको स्टडी किया जाए, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए कि किस तरीके से वो ग्रुप की शक्ल में काम कर सकें। प्रपोज्ड मोर पीपल ओरिएंटेड आइडियाज़ दैन साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोअर्स। उसने कहा लोगों से पूछा जाए, उनसे आइडियाज़ लिए जाएँ कि किस तरीके से वो मोटिवेट होते हैं। थर्ड वन उसने कहा थॉट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन ग्रुप एथिक। इसके बाद आता है जी लास्ट पे
چیسٹر برنرڈ 1930 میں اس نے یہ جو او بی کے بارے میں تھیری پیش کی. اس نے کہا کہ ایکچوئل مینیجر ہو تھاٹ آرگنائزیشنز ور سوشل سسٹم دیٹ ریکوائرڈ کوآپریشن، کہ مینیجر کا اصل کام کیا ہے کہ سوشلائزڈ کرے، لوگوں کے درمیان کوآپریشن کا انوائرمنٹ پیدا کرے. اور ہی بلیوڈ مینیجر جاب واز ٹو کمیونیکیٹ اینڈ اسٹیمولیٹ امپلائز. نے کہا مینیجر کا کام یہ ہے کہ امپلائز کو کمیونیکیٹ کرتا رہے اور ساتھ ساتھ امپلائز کو اسٹیمولیٹ کرے، موٹیویٹ کرے. اینڈ فرسٹ ٹو آرگیو دیٹ آرگنائزیشنز ور اوپن سسٹم. اس نے اس پہ بھی بڑی بحث کی کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایک اوپن سسٹم کی طرح ہوتی ہیں. اوپن سسٹم کو ہم آگے مزید ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اوپن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر رلائی کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ڈیپینڈنٹ ایچ ادر. اس کے ساتھ ہی اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ سیریز کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.